So good morning. In the previous lecture, we had already started semantic processing, and we have covered discussion around the WordNet, that how this knowledge graph works and how this WordNet is helping us to get the better understanding while doing the search. How this thing is working in the Google. So this knowledge graph is actually just a representation of all the entities and their relationships. So this is what we saw in the previous lecture. Uh, I said that just like Plato is a philosopher, he is a human, and Plato and Aristotle was born in Greece. So this was born in was the relationship between the Plato and Greece. Similarly, Athens is the capital of Greece. So this kind of relationship and entities is based on knowledge graph example. And we also discussed the different applications of knowledge graph, that WordNet, ConceptNet, UMLS, and the Google search. All these four are actually knowledge graphs, and they are utilizing knowledge graph on the backend. WordNet ka we saw that how the semantic relationships, the things were connected, and what were the different kinds of verbs or the nouns, variations of a single word, we saw in the yesterday's lecture. And then we also discussed that multiple organizations are working on building the knowledge graphs in their domains. So we had discussed that how the WordNet works, and what was the meaning of synonym, antonym, hypernym, and hyponyms. Uh, so synonyms, we know that the words which are actually having the similar concept or the meaning. So large is synonym of big. Antonym means that opposite concepts are there. Large is the antonym of small. Similarly, hypernym and hyponyms are kind of parent and child relationship. So hypernym means that relationship of between the concept and the subordinate. So fruit is the hypernym of mango. So kind of fruit is the parent of mango, and mango is the hyponym, or the apple is the hyponym of fruit. So apple is the child, right? So hyponym means that the relationship between the concept and its subordinate. We also discussed the meaning of holonyms and meronyms in yesterday's lecture. Holonyms mean that relationship between the whole and its parts. So face is the holonym of eyes, right? And similarly, eyes are the meronym of human body, or even you can say face, right? Eyes are the meronym of human face. So this is the kind of relationship that we have discussed yesterday. So based on that, I want to show you the code also now. I have already done the coding, and so we will be looking something like this will be there in the code, uh, from the understanding of the keywords that we have just discussed. So coming to the code, so I've already put it in the RapidML data science folder of my GitHub. And within this, we can see that once we install the NLTK, and the WordNet has been downloaded through NLTK only, because we want to work around NLTK. So we want to download WordNet through NLTK only. Then after importing WordNet, we will look at the synsets. So variations of synsets of tractor in the WordNet, we could see yesterday that there were two different kinds of variations of this word, right, as a noun. So dot and dot n. So these are the two things. These are the two synsets available for the word tractor, and it means that we want to look at the different senses now. Sense means that what is the sense? It is it a noun? Is it a verb? So sense ka matlab ye hota hai. And if we have got two synsets available, now we will also try to print them. So these are the two different definitions that have been coming out of the tractor keyword from the WordNet. So wheeled vehicle with large vehicles used for farming, and the second one is truck that has a cab but no body, used for pulling large trailers or vans. So these are the two definitions. So let's focus on the first one. So we will use the first one, and I will find I will try to find the hypernyms. Hypernym क्या होता था? Hypernym was the uh, who is the father, right? So who is the parent of that thing? So tractor ka parent is self-propelled vehicle. We also saw this thing in the diagram in the PPT. So tractor
का जो रूट है और द पेरेंट है इज द सेल्फ प्रोपेल्ड व्हीकल. So the same thing is visible in the code also. Similarly, if I want to find the hypernym of this self propelled vehicle, तो उसके भी ऊपर जाएंगे तो wheeled vehicle आएगा, that is available in the diagram. Now we will also look at the meronyms. तो meronyms में wheeled vehicle के अंदर क्या क्या आ रहा है? Axle, brake, splasher, wheel. So these are the four meronyms यहाँ पे दिख रहे हैं हमें. So wheeled vehicle में meronym क्या होता था? Meronym was something relationship between a part and a whole. So this is part of human body, right? Eyes are the meronym of human body. So we are trying to kind of find that what different parts make the wheeled vehicle. तो meronym ये होता है कि has part वाला part ढूंढना हमने, and this is what we have already got it in the output. इसमें से 3 वहाँ diagram में है, 4th Excel वाला नहीं है वहाँ पे. These 3 are there. So that diagram is not fully made, but yes, to give the idea, it is easy to visualize. So hyponyms क्या होते हैं? Hyponyms are the what are the relationship between the concept and its subordinate. तो hyponym का मतलब है कि अब उसके अंडर क्या आ रहा है. So if I try to find the wheeled vehicle, उसमें बहुत कुछ आ रहा है, मतलब उसके बहुत सारे variations हैं. And uh, we were talking about the self-propelled vehicle. So this is only one of the option available, but बहुत सारे और भी हैं. And similarly we can also try to find the synset of Excel के holonym. Holonym में मतलब we are trying to find कि वो कैसे उससे जुड़ा हुआ है. The wheeled vehicle is the holonym of Excel. Similarly hyponyms of self-propelled vehicle, तो मतलब जो भी है हमने अब already, because we have got the values through the tractor and all the connections have been made through the WordNet, तो यहाँ पे हम सब कुछ प्रिंट करवा के देख सकते हैं. So for whichever entity you want to get the values of holonyms, hyponyms, meronyms, तो वो सब यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा और वही सब यहाँ पे किया हुआ है. So let's go back to the PPT. So WordNet का तो समझ में आ रहा है कि हम यहाँ पे is a, has part, antonym, attribute, तो मतलब बहुत कुछ ऐसी वाली चीजें ढूंढ रहे हैं. And based on that हमने यहाँ पे कोडिंग भी करके देख लिया for few of the terms. This is not the end of all the relationships, but these are the main 6 relationships that we wanted to look into. Now let's talk about the word sense disambiguation. Homonymy is when a word has multiple entire different meanings. So जैसे suppose कोई sentence है, अब यहाँ पे लिखा भी हुआ है, for example consider the word pupil. It can either refer to the students or the I pupil. I में भी pupil होता है and बच्चों को भी हम pupil कह देते हैं. तो depending on the context, by reading the whole sentence we can judge that what is the meaning of the word that is being referred to. Suppose you are searching for the word pupil, the search engine sometimes give data relevant to the context and sometimes give irrelevant data. Such things happen because the query may contain words whose meaning is ambiguous or those having several possible meanings. So just to solve this ambiguity problem, we will look into the Lesk algorithm now and we will also look into the code of it. Lesk को थोड़ा सा implement भी करके देखेंगे. Lesk का मतलब ये है, मतलब इसका समरी अगर मैं 2 लाइन में बताऊं वो ये है कि हम सिर्फ हमारे वर्ड की बात नहीं कर रहे, हम उसके नेबर्स के बेसिस पे भी डिसीजन लेंगे. So for example we have this, she booked the flight ticket to Delhi in advance. There are 2 definitions, gloss 1 gloss 2. यहाँ पे 2 definition है suppose हमें WordNet के through जो मिलेगा. So arrange for and reserve in advance. The second definition is a written book or composition that has been published. तो बुक का मतलब वो बुक वाला रिटन वर्क वाला भी देख सकता है और बुक का मतलब हम ये भी देख सकते हैं कि हमने कुछ रिजर्व किया है. But depending on the keywords in examples, तो we will match the keywords out of the examples कि भाई इसके क्या क्या example बनते हैं arrange for और and reserve वाले केस में. तो यहाँ पे flight tickets ये सब match हो जाएगा. So that's why this sentence will get classified for getting this definition, the first one, not the second one. So this is unsupervised word sense disambiguity algorithm based on the comparing of dictionary definitions and its neighboring words. Mainly यहाँ पे यही है कि dictionary
डेफिनेशंस तो छोटा बच्चा भी देख के पढ़ सकता है, बट व्हाट इज द एक्सटेंट टू विच दैट चाइल्ड कैन अंडरस्टैंड द मीनिंग इन द डिक्शनरी। तो कॉन्टेक्स्ट की बात हो रही है यहाँ पे, तो कॉन्टेक्स्ट का this Lesk algorithm has taken into the consideration that we will look into the neighboring words to find the context. So let's look at the code now for Lesk. I will take you to that page. Just a second. So getting the Lesk implementation, importing the few things, NLTK and downloading the WordNet through NLTK. Then WordNet को हम WN लिखेंगे, and we are also importing the word sense disambiguation WSD from NLTK. Now let's say that we have these three sentences. The die is cast, roll the die to get a 6, what is dead may never die. तो तीनों में मतलब डिफरेंट है। पहले वाला इज काइंड ऑफ स्टैम्प, ठीक है, कि भाई द डाई इज कास्ट का मतलब है कि स्टैंपिंग होने के लिए स्टैम्प बना ली गई है। रोल द डाई, दिस इज द लूडो वाला डाई, राइट। सो वी वांट टू रोल द डाइस, तो वो वाली चीज़ है। एंड व्हाट इज डेड में नेवर डाई, तो ये थोड़ा एंड ऑफ एनीथिंग, मतलब किसी भी चीज़ का जो एंड है वो उसके बारे में बात हो रही है। सो सिननेट ऑफ डाई विल गिव मी दीज डिफरेंट वेरिएशंस आउट ऑफ द वर्ड नेट। तो मेरे को यहाँ पे सिन सेट्स में नाउन वाले भी मिल रहे हैं, वर्ब वाले मिल रहे हैं, एंड देयर आर मल्टीपल वेरिएशंस। तो 10-11 तरह के वेरिएशन है यहाँ पे, और एक फेल वाला भी एज ए वर्ब डाई में मिल रहा है। सो वी विल ट्राई टू गेट द वेरिएशंस के भाई डाई में अगर मैं सिर्फ नाउन पे फोकस करूँ तो नाउन वाले कितने हैं। तो मतलब क्योंकि यहाँ पे वर्ब वाले भी बहुत थे, बट नाउन वाले सिर्फ पहले 3 थे, ठीक है। तो दीज 3 वर द नाउन एंट्रीज, दीज आर द 3 नाउन एंट्रीज, एंड टोटल 3 डेफिनेशन है नाउन वाली। तो तीनों को प्रिंट भी करवा के देख लेते हैं। द 3 डेफिनेशन आर दीज नाउन के हिसाब से। सो स्मॉल क्यूब विद 1 to 6 स्पॉट्स ऑन द 6 फेसेस, तो ये समझ में आ रहा है। डिवाइस यूज फॉर शेपिंग द मेटल, ये भी समझ में आ रहा है। कटिंग टूल दैट इज फिटेड इनटू ए डाई स्टॉक एंड यूज फॉर कटिंग मेल एक्सटर्नल स्क्रू थ्रेड्स ऑन स्क्रूज। तो मतलब 3 तरह के डेफिनेशन है। एंड वी हैव सम कंफ्यूजन, अब अभी भी अब यहाँ पे हमें बताना पड़ रहा है, मतलब कि हमें नाउन वाला पिक करवाना है या वर्ब वाला पिक करवाना है। तो दिस इज काइंड ऑफ ए ड्रॉबैक कि हम डेफिनेशंस देख रहे हैं, अभी मैच करवा रहे हैं, तो हमारा एफर्ट लग रहा है। बट थ्रू लेस्क एल्गोरिथम अगर हम इसको अब इम्प्लीमेंट करेंगे, सो अगेन लेट्स से वी हैव दिस सेंटेंस, ऊपर XYZ 3 सेंटेंस थे। द फर्स्ट सेंटेंस वाज द डाई इज कास्ट, तो उसको हमने लेस के थ्रू स्प्लिट करके डाई को चेक करा, तो उसने मेरे को बताया कि दिस डाई इज लुकिंग एट द डेफिनेशन वर्ब 7, ठीक है। वर्ब 7 वाला डेफिनेशन है, कट और शेप विद डाई। तो मतलब ये गलत है, थोड़ा सा अलग है। बट इफ वी राइट दैट नाउन में दिखाओ मेरे को, तो नाउन के हिसाब से इट इज गिविंग मी ए कटिंग टूल दैट इज फिटेड इनटू ए डाई स्टॉक, तो ये बता रहा है, ठीक है। तो ठीक है, ये मतलब स्टैंपिंग वाला लग भी रहा है कि चलो स्क्रू लगा के वो फिट कर दिया कहीं पे, तो ये वाला बेटर है रेदर देन दिस वन। सो वाई का अब सेकंड सेंटेंस का देखा डेफिनेशन, तो ये कह रहा है कि भाई टू बी ऑन बेस एट द एंड ऑफ एन इनिंग ऑफ ए प्लेयर, जबकि सेंटेंस ये था, तो हम डाइस की बात कर रहे हैं यहाँ पे और ये कुछ और ही कह रहा है। तो हमने फिर नाउन वाला बोला तो उसने मेरे को ये दे दिया। तो मतलब इसमें एक ड्रॉबैक ये है कि मुझे मेरा पार्ट ऑफ स्पीच देना पड़ रहा है, POS देना पड़ रहा है, तभी वो डेफिनेशन ठीक से बता पा रहा है। तो ऑटोमेटिंग द प्रोसेस, अगर हम इसमें अब स्पेसी के थ्रू करेंगे, वी विल हैव दिस ऑटोमेटिक POS टैगिंग। So we will use it through Spacey. We will install the Spacey and then we will go ahead with the using of this library of English core NLP task, web-based training and small model. तो उसमें हमने पहले से चेक कर लेना है कि भाई मेरा कौन सा है, क्या है, मतलब POS टैगिंग अपने आप वो मैपिंग कर लेगा। एंड बेस्ड ऑन दैट वी विल
give the inputs and it will give me the outputs. तो अब एक ही बार में without even writing POS tag along with it वो ठीक से definition दे पा रहा है. तो आई वर्क एट गूगल और साथ में गूगल का डेफिनेशन पूछेंगे तो वो कह रहा है वाइडली यूज सर्च इंजन. ठीक है, समझ पा रहा है. एंड देन आई विल गूगल इट का मतलब है सर्च द इंटरनेट यूजिंग द गूगल सर्च इंजन. तो मतलब समझ में आ रहा है कि नाउ नाउ द अपडेट ऑफ दिस आउटपुट हैज बीन बेटर. एक बार में हमें पता चल रहा है rather than writing the POS tag every time again and again. So the solution for automatic POS tagging with Lesk was using the spacey and फिर उसके बाद अगर हम Lesk को use करेंगे then the things are fine. So the summaries use spacey for this along with the Lesk. Coming to the next slide. Now let's talk about semantic processing. We know that grammar is not really necessary, right? मतलब sentence कुछ भी हो सकता है, हमें समझ में आ जाता है. Meaning can be inferred from the context. के context क्या है उसके ऊपर focus करेंगे rather than grammatically अपने sentence को हमेशा अच्छा बनाते रहो. क्योंकि real world में raw data will never be semantically 100% correct. We have to get to the context. Especially social media में तो कभी भी ग्रामेटिकली फुली करेक्ट सेंटेंसेस लिखता ही नहीं है कोई, शॉर्टकट ही लिखते हैं हम. तो डिस्ट्रीब्यूशनल सिमेंटिक्स में क्या क्या आ रहा है? वर्ड एम्बेडिंग्स, applications of chatbots and sentiment analysis, IMDb movie review classification. So I will try to implement and explain all of these things. Today we will be talking about word embeddings in terms of continuous bag of words and skip gram model. तो मतलब वो डिस्कस करूंगा मैं. So let's continue. So why we need semantic processing? Because this guy gave this sentence, this grammatically correct sentence in 1957 book of syntactic structures. Colorless green ideas sleep furiously. इसमें full stop भी है, first letter capital भी है, and if you go into the detail of it, colorless green ideas are the noun, sleep is the verb, furiously is the adverb. It starts with a capital letter and ends with a period. तो ऑल दीज थिंग्स आर ग्रामेटिकली करेक्ट, पर इसका कोई सेंस नहीं बन रहा. ठीक है, मतलब कॉन्टेक्स्ट होना जरूरी है, सिर्फ ग्रामर से बात नहीं बनेगी. सेकंड पॉइंट, कस्टमर रिव्यूज अगर आप उठाएंगे, आई हैव टेकन स्क्रीनशॉट्स फ्रॉम Amazon वेबसाइट. सो लुक इज वेरी बैड, नॉट सेटिस्फाइड डॉट डॉट डॉट, प्लीज डोंट बाय दिस. ठीक है, आई सर्च अबाउट सम बैड शूज. ठीक है, उसमें मैंने सर्च किया कि भाई 1 रेटिंग वाला मेरे को दिखाओ जूते. तो जूतों के बारे में ये मटेरियल इज नोट ओके, दिखता कुछ है, रियल में कुछ अलग है. सो दिस इज ए चैलेंज ऑफ मल्टीपल लैंग्वेजेस. इसमें हिंदी वाला भी ऐड हो गया है. इवन इफ वी आर यूजिंग द इंग्लिश करेक्टर्स, स्टिल द लैंग्वेजेस हिंदी दैट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट, ये इंग्लिश लाइब्रेरी में तो नहीं मिलेगा. दिस काइंड ऑफ वर्ड्स विल नॉट बी फाउंड. सिमिलरली दिस शो इज टोटल वेस्ट ऑफ मनी. तो मेरे को यहाँ पे ग्रामेटिकली कुछ ज़्यादा इशू दिखे नहीं. एक सेकंड लगा कि ये कुछ पेड रिव्यू लग रहा है मेरे को, बिकॉज सेंटेंस फॉर्मेशन ठीक है, मतलब ऐसे कोई शॉर्टकट नहीं मारा हुआ. स्पेशली व्हेन, अगर मैं अपने आप को इमेजिन करूँ, इफ आई एम एंग्री आई विल नॉट बी राइटिंग फुल वर्ड्स. तो मैं रिव्यूज में शॉर्टकट मारूंगा. और रियल वर्ल्ड में बहुत सारे एक्रोनिम्स और शॉर्टकट्स यूज होते हैं चैट में. सो वी नीड टू टेक केयर ऑफ दोज थिंग्स. So that's why we need semantic processing. Now, relationship representation of the meaning. If we try to find the meaning of human in the dictionary on thesaurus.com, it will give me meaning of human is of pertaining to characteristic of or having the nature of people. ठीक है, तो अब यहाँ पे एक और वर्ड आ गया people. If I am human, if I am not human and if I am computer, computer को क्या पता अब वो बंदा computer है जो हमारा. So the machine is searching for human, meaning of human. So the nature of people. So people का वो देखेगा backend पे. People's full form is, मतलब जो भी definition है, definition is persons indefinitely or collectively, persons in general. To find it easy to talk to people, what will people think? This is the example. But अब ये people के बाद persons आ गया. So the if the machine will go and search for person, person के definition is human being. तो यहाँ पे loop बन गया. तो यहाँ पे it's more about understanding the context from the examples. यहाँ पे अब neighboring words भी use होंगे and we will also try to find the context. Otherwise simple word meaning के basis पे तो ये solve नहीं होने वाली problem.
Human will send you to people, people will send you to person, person will go bring you back to human. तो यहाँ पे machine को सिर्फ word level पे तो solution नहीं मिलने वाला. And there was this sentence given by this one liner given by this person in 1957: you shall know a word by the company it keeps. So the money was credited to my bank account. We were strolling on the bank of the river. अब strolling का अगर सिर्फ मैं strolling लिखूंगा तो it is kind of difficult to understand strolling का मतलब क्या है, हर किसी को नहीं पता. But if we read the full sentence समझ में आ रहा है कि भाई बैंक ऑफ द रिवर के आसपास थे हम, तो वहीं घूम फिर रहे थे. ठीक है, वैसा कुछ है. नाउ सिमिलरली इफ वी से शी रोड द राइट आंसर, टेक ए राइट आफ्टर 2 किलोमीटर्स. सो यहाँ पे राइट का मतलब है कि सही लिखा है, यहाँ पे राइट का मतलब है कि राइट टर्न करना है. तो हमें स्पेलिंग वही है, टोन भी वही है बोलने की, बट द कॉन्टेक्स्ट इज डिफरेंट व्हेन वी यूज द डिफरेंट नेबरिंग वर्ड्स. तो बाय कंपनी ऑफ वर्ड्स उसके आसपास कौन से वर्ड्स हैं, उसी वर्ड का मतलब चेंज हो गया. सिमिलरली बुक का मतलब यहाँ पे चेंज हो गया, रीडिंग बुक्स या आई हैव बुक द टिकट. तो रूट वर्ड तो बुक की है, बट द डिफरेंस इज अगेन डिपेंडिंग ऑन द नेबरिंग वर्ड्स. सो the suspect absconded to Canada. Several prisoners absconded from jail. अब absconded का मतलब भी किसी किसी को नहीं पता होगा, तो fled, right? But yes, it is easy to get the context अगर हम पूरा sentence पढ़ रहे हैं. Ogama is the king of fruits. Ogama is beloved by the majority of people. Ogama can either be consumed raw or in form of salad, juice, jam, milkshake or pickles. तो actually ये mango के बारे में बात हो रही है. But yes, it is more about to understand अगर कोई new word आ भी जाए, by the properties, by the different sentences in which that word has been used, we try to get the context out of it, कि इसका मतलब क्या हो सकता है. So distributional semantics creates word vectors such that the word meaning is captured from its context. So we will look at the distributional semantics now. So geometric representation of the words की बात करें तो we can see agar my y column is talking about feminineness and the x column is talking about the specialty. So king and queen are special on a scale of x-axis. They have got the value of 8, and for the feminineness, king is having value of 2, queen is having a value of 11. Similarly, man versus woman का 2,3 and 2,12 है. So meaning can have different dimensions. Dimensions का मतलब यही है कि अगर हम वेक्टर बनाएंगे तो हमें कुछ ऐसा dimension मिलेगा. And if we want to calculate something like this now, king minus man plus queen equal to queen, king minus man plus woman equal to queen. तो यहाँ पे if we mathematically calculate this, it is coming out to be exact value depending on the right hand side of the figure. तो normally in real world you will not get the exact match, but yes, अगर 8,11 आ रहा है तो हो सकता है यहाँ पे 7,10 होता, but it will be very close to that point. So mathematically we can reach the output of these kind of words through this method. And we also have another method called cosine similarity. इसमें यही होता है that जितना ज़्यादा value आएगा, it will be, if it is closer to 1, उतना ही रिलेशनशिप है उन दो वेक्टर्स में, वो आपस में सिनोनिम है. We will look into the different examples, synonym, antonym क्या होते हैं, and how the values of cosine similarity can help us to identify those things. But this is the definition, this is the formula. Cos theta निकालेंगे, this will be equal to x into y divided by the magnitude of x and y, dot product and divided by magnitude of both of them multiplied by each other. So this is the basic formula, and these are the three examples. अगर हम synonymous words की बात करें, unrelated words versus antonyms. So these three words have been, the three different kinds of words have been portrayed in front of you using the cosine similarity. Cosine similarity में अगर मेरी बहुत हाई आ रही है, nearly 1 आ रहा है इसमें, तो अगर 0.96 वैल्यू आ रही है, it means that it is synonymous word. Then if unrelated words हैं तो 90 डिग्री होगा, zero connection between each other. अगर 180 डिग्री opposite है, मतलब -1 आ रहा है वैल्यू, तो these two are the antonyms of each other, अगर दो वर्ड्स की ऐसी बात हो रही है. Similarly, if we want to apply the cosine similarity on this figure now, and we want to find the cosine similarity of man and woman,
मैथमेटिकली इफ यू सॉल्व इट यू विल गेट द वैल्यू ऑफ 0.91 विच इज अंडरस्टैंडेबल, क्योंकि यहाँ पे हमें पता चल रहा है इंट्यूटिवली कि एंगल भी छोटा है, तो जितना छोटा एंगल होगा उतना सिमिलैरिटी ज़्यादा होगा। वर्सेस अगर मैं वुमेन और किंग का निकालूं जो सबसे दूर है आपस में, तो वुमेन एंड किंग का वैल्यू इज कमिंग आउट टू बी 0.398। ऑब्वियसली मतलब मैथमेटिकली आप करके देख लेना, बट इट वाज इंट्यूटिव दैट जितना ज़्यादा दूर होगा उतना ज़्यादा वो नॉन सिमिलर होगा। 90 डिग्री पे होता है फिर तो कनेक्शन ही जीरो होता, तो अगर एंगल ज़्यादा है तो 0.398 आना ही था। सो दिस इज हाउ वी कैन विजुलाइज द vectors, the similarity between the words। तो इसके बेसिस पे we can calculate that what is the similarity between different sentences and keywords। now intuition of word to vec model की बात करते हैं। so machine learning based approach में you shall know the word by the company it keeps, ठीक है, this we know। so if a machine can predict the words from the context then it would have captured meaning of the word। तो समझ में आ रहा है, मतलब बेसिक सा एजेंडा समझ में आ रहा है कि हमें कॉन्टेक्स्ट के बेसिस पे कुछ मीनिंग का कैप्चरिंग करना है, बट थ्रू मशीन लर्निंग नाउ। एंड if we talk about this thing, let's say making a neural network that predict a word given the nearby words, ये स्टेप वन है। अब न्यूरल नेटवर्क भी डिजाइन करना है टू गेट द प्रिडिक्शन ऑफ द वर्ड अगर नियर बाय वर्ड्स गिवन है, मतलब फुल बाकी सेंटेंस गिवन है, एक फिल अप करना है। तो प्रिडिक्शन हम ऐसे कर देंगे बेस्ड ऑन द सराउंडिंग वर्ड, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, ग्लिटर्स इज द प्रिडिक्टेड वर्ड, एंड वेट फॉर इट टू प्रिडिक्ट वेल इनफ, क्योंकि एक बार में तो नहीं आएगा, यू विल हैव टू ट्रेन योर मॉडल ओवर मल्टीपल इपॉक्स, तो ये सब करना ही पड़ेगा। and then find out what it has learned, the output of the neural network is not what we are interested in। अब यहाँ पे बात ये हो रही है that we are not interested in the आउटपुट, ठीक है, मतलब अगर हम प्रिडिक्ट करना भी चाहते थे कि मेरे को लेट्स से ऑल दैट ग्लिटर्स इज गोल्ड वाला जो एग्जांपल है, तो ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। अब इनिशियली इन सब की कुछ वैल्यू होगी, अब इसकी तो ऑब्वियसली जीरो होगी क्योंकि ये था ही नहीं, खाली था। एंड इन सब का कुछ वैल्यू होगा, ठीक है। तो इनको अगर हम पास करेंगे थ्रू ए लेट्स से टू लेयर टू हिडन लेयर डीप लर्निंग मॉडल, कुछ आउटपुट आएगा, और आउटपुट हमें वो ग्लिटर चाहिए, मतलब अब वो बाकी वर्ड्स का भी प्रिडिक्शन करेगा बट इसका सबसे ज़्यादा हाई आएगा, ठीक है, हाई प्रोबेबिलिटी है। तो ऐसे कुछ करके कनेक्शन बना होगा, इट विल बी फुली कनेक्टेड लेयर दोनों साइड में, और यहाँ पे भी फुली कनेक्टेड होगा, तो हर जगह फुली कनेक्शन बने हुए हैं, तो वट एवर इज द आउटपुट वो आ जाएगा हमारा। तो सो यहाँ पे एक कंसेप्ट आता है वेट्स का। हम ये कहना चाह रहे हैं कि हम इसमें इंटरेस्टेड कम है, बट वी आर मोर इंटरेस्टेड इन द वेट्स। वेट्स क्या होते हैं? फॉर एग्जाम्पल मेरे पास इनपुट में टोटल थे एक दो तीन, थर्ड वन इज द इज 4 5। अगर मेरे पास 5 इनपुट थे, 5 न्यूरॉन, 5 वर्ड्स अगर इनपुट थे, एंड इफ माय फर्स्ट हिडन लेयर इज हैविंग 4 न्यूरॉन्स, तो वेट्स क्या होंगे इसके? W1 का वेट होगा 4,5, एंड सिमिलरली अगर यहाँ पे 5 था, यहाँ पे 4 था, तो वेट्स ऑफ सेकंड विल बी 5,4। so we are interested in the values of these things 4,5 and 5,4 because this will be the actual word embedding for us। so we are interested in W1 and W2 instead of the output। तो यहाँ पे output पे focus करने के बजाय we are interested in the W1 W2 which are actually the activation values। क्योंकि अगर कोई भी input जा रही है, अगर कोई भी इनपुट जा रही है मेरे न्यूरॉन में, तो जो उसका आगे वैल्यू पास हो रहा है इसको मैं बोलता हूँ एक्टिवेशन वैल्यू। तो उसकी जो एक्टिवेशन वैल्यू है, जो मल्टीपल एक्टिवेशन वैल्यूज बन रही हैं, वी आर इंटरेस्टेड इन दोज, एंड these activation values will actually form your weight matrix। so let's look at this example। करना क्या है? फॉर एग्जांपल मुझे फॉरवर्ड पास करना था, तो आई नो दैट देर आर 3 काइंड्स ऑफ फ्लावर्स, ठीक है, सिटोसा, वर्सिकुलर एंड वर्जिनिका इन द आइरिस डेटा सेट, and these were the 4 features f1, f2, f3 and f4। these were the 4 features that we used to predict the
flower being which one. तो इन चारों को अगर हम बोलें कि ये मेरा एक एम्बेडिंग है जिसको मैं इनपुट देना चाहता हूँ, so I am giving these four values as the input to my input layer. So my input is n, 4, क्योंकि मेरे n जितने भी हों, we have decided to keep our neurons as number of 4 neurons. Then in the first hidden layer we have decided to keep total 5 neurons, and in the layer 7 in this we have 7 neurons. तो यहाँ पे ये समझ में आ रहा है कि इनपुट वाले 4 न्यूरॉन है, फिर 5 है, फिर 7 है, और फाइनल आउटपुट में 3 है, बिकॉज टोटल देयर वर 3 आउटपुट क्लासेस. तो एक बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग बन रही है. और यहाँ पे जैसे मैंने वेट 1 का बताया था, तो 4,5 ये जो लिखा हुआ है, actually it should be 5,4. वेट्स हमेशा उल्टे होते हैं, ये थोड़ा गलत है. सो द वेट्स हेयर विल बी, माय W1 मैट्रिक्स विल बी 5,4, और यहाँ पे इट विल बी 7,5. ठीक है, तो ये उल्टे लिखे हुए हैं फिगर में. सो वी नीड टू टेक केयर ऑफ दिस. एंड दिस वन विल बी, थर्ड वेट विल बी 3,7. राइट टू लेफ्ट आना होता है. ठीक है. So these are the three weights that we have to work around. And input to first layer, output of first layer, input to second layer, output of second layer. So these are the different things that we want. Forward pass में ये होता है. So let's look at the basic example. एक छोटा सा example मैंने इसमें और depth में दिखाया है. That मैंने बोला कि मेरे को 4,5, यहाँ पे एग्जांपल में 4,5 ही है, तो उसके बेसिस पे है ये डायग्राम. बट इट शुड बी 5,4, क्योंकि राइट टू लेफ्ट आना होता है. सो लेट इट बी 4,5 जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग. अगर मेरा ये इनपुट है एंड दिस इज माय वेट मैट्रिक्स एंड दिस इज माय बायस, तो दिस इज द फर्स्ट, इस वाले लेयर के फर्स्ट न्यूरॉन का एक्टिवेशन वैल्यू -10.8. तो ये वाली जो वैल्यू है वो इसके बेसिस पे कैलकुलेट करी जा रही है. यहाँ पे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन नॉर्मल लगाया जा रहा है एंड यू आर एक्चुअली इंक्लूडिंग द एडिशन ऑफ बायस वैल्यू. तो वो करने के बाद यू आर गेटिंग -10.8. देन यू विल पास इट थ्रू सम सिग्मॉइड एक्टिवेशन फंक्शन, और उसके बेसिस पे जो हमारा आउटपुट आएगा, दिस इज माई आउटपुट ऑफ द हिडन लेयर 1. तो हिडन लेयर 1 का ये मेरा एक मैट्रिक्स बन गया विच इज एक्चुअली सर्विंग एज द हिडन लेयर 1 का आउटपुट, जो मेरा हिडन लेयर 2 में जा रहा है. So this output is looking like this thing. Then now let's talk about the skipgram and the continuous bag of words. दोनों में difference simple है. Skipgram में we are predicting the surrounding words versus continuous bag of words में we are predicting the middle word based on the surroundings. तो यहाँ पे example में यही बताया गया है that all that glitters is not gold में glitters अगर मेरा एक center word है, input word है, we will try to predict what are the surrounding words. All that is not gold. So these these 5 words will be the red highlighted words are the predicted words. All that glitters is not gold में यहाँ पे glitters अगर मेरा predicted है तो ये मेरे surrounding है. So this is my CBOW method. So these two are the different variations. अगर skip gram और continuous bag of words लगा रहा है कोई, तो एक basic understanding पता होनी चाहिए that this is how it works. So now if I want to train my continuous bag of words model, let's keep this sentence as the input. My experience with Harper has been wonderful. Vocabulary size is 7 and context size is 1. तो अब इसमें context size का मतलब ये है that we are actually talking about the कितना मेरे को range रखना है left right पे देखने का neighboring words में. Vocabulary इसलिए 7 है because there are 7 unique words. So the context size determines the number of words that are present before and after a given word would be included as the context word. तो मतलब वही है जो मैंने अभी बताया. So यहाँ पे if I look at the source text, here my, अगर मेरा जो फर्स्ट वर्ड है my के लिए पीछे तो कोई सराउंडिंग वर्ड नहीं है, आगे एक एक्सपीरियंस वर्ड है जो सराउंडिंग में है. तो यहाँ पे हम जब आउटपुट सामने ट्रेनिंग सैंपल लिखेंगे, we will write it like this, that मेरा सराउंडिंग में एक्सपीरियंस है but my current word is y. Similarly my experience with, सराउंडिंग में my and with बोथ हैं, तो my with यहाँ पे आ गया, experience is my center word.
Similarly, with is my center word, experience and स्थापर are my surrounding words. तो ऐसे करके ये पूरा fill हो जाएगा. And similarly you can now make the training samples x and y. ऐसे करके जो हमने पीछे बनाए हैं उसका x और y हमें क्लियरली पता है कि इसमें x क्या है, y क्या है, इनपुट क्या आएगा, आउटपुट क्या आएगा, for the model sake of models. And we need to implement it through the one hot encoding vector. ठीक है, वन हॉट encoding में we need to have this understanding, पता तो है ही है, but we know that depending on these words, ऐसा कुछ अगर हम words implement कर भी रहे हैं directly मेरे sentence में, तो ये मेरे को कुछ खास आउटपुट नहीं देगा, मतलब मेरा मॉडल समझ भी नहीं पाएगा इसको. एंड we need to convert it into the vector form. So this is how the one hot encoding vector has to be done. तो इसमें we all know easily that अगर मैं इसको फर्स्ट वाले को 1 कर रहा हूँ तो बाकी सारे 0 हो गए, तो मतलब we're actually expanding our embedding. तो ये अपने आप में पूरा एक embedding है लेफ्ट टू राइट. अगर मैं बीन वर्ड की यूसेज करना चाहता हूँ, आई विल पास दिस वेक्टर 1 फॉलोड बाय 6 zeros. Similarly, experience वाले में 0 1 and then followed by 5 zeros. So these are the embeddings in itself, left to right पूरा row. ठीक है. So that's all for today. I wanted to discuss till here. We will be implementing this CBOW method in the next class, and then we will continue with completing on the syllabus. So that's all. I'm ending the recording now.